Hi everyone, apana manaka samastanku ehi video re bahut swagatata ajira ehi video re ami apana manka sahita public administration. Ra discuss the meaning and key elements of good governance ra long question answer ra notes share. And discussion kariba good governance is a concept that refers to the way in which public institutions and organizations conduct their affairs and manage public resources. It encompasses principles, processes, and systems that contribute to effective, accountable, transparent, and inclusive decision making. The key elements of good governance include rule of law, transparency, accountability, participation, responsiveness, consensus, orientation, strategic vision, effectiveness and efficiency, equity and inclusiveness, ethical conduct, strategic use of technology, predictability and stability. Good governance is essential for the well-being of societies and the effective functioning of public and private institutions. It fosters trust, encourages economic development, and ensures that decision-making is responsive to the needs of the people. Achieving good governance requires continuous efforts to strengthen institutions, promote transparency, and engage citizens in the democratic process. We hope all enjoy this video and understand the topic. Start by notes. Let's started. Governance. The good governance kono discuss the meaning and key elements of good governance discussion kariba. Good governance ro meaning kono atar key element kon rahichi. Most important question. Good governance can be very simply defined as governance which is based on the certain values or norms and has quality of being effective in security the goals of socio-economic development of the people of their society. तो आम सिंपली बुझिया गुड गवर्नेंस कहले एटा सिंपली कौन पीपुल मानकर सोसाइटी कौन डेभलप वेलफेयर ये सब सब क्षेत्र सोशियो इकोनॉमिक क्षेत्र में पॉलिटिकल क्षेत्र में सब क्षेत्र डेभलपमेंट को बुझाए. In 1982 ए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट डिफाइन को 1982 मसीह वर्ल्ड बैंक गोटे रिपोर्ट करते गुड गवर्नेंस को ऊपर. तो से डिफाइन करते जे गुड गवर्नेंस ऑफ द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी की बोले कौन गुड गवर्नेंस मैनर जो कि पावर को एक्सरसाइज कराऊँगी कौटे ना कंट्री इकोनॉमी को मैनेज करें इन सोशल रिजन कौन आम जो सब सामाजिक प्राकृतिक जो संबल रही कौन मैनेज कराया सहित विकास डेभलप कराया. इन दिस वे यही प्रकार आम कह गले गुड गवर्नेंस कैन बी इक्वेटेड विथ द साउंड डेभलपमेंट मैनेजमेंट आपको साउंड डेभलपमेंट मैनेजमेंट आम कहीपर. नेक्स्ट कौन है ना इन 1989 तो 1982 मसीहा बर्तमान 1999 मसीहा कौन है द वर्ल्ड बैंक आइडेंटिफाए गुड गवर्नेंस इन द टर्म्स ऑफ 4 की डायमेंशन. तो पुणी आइडेंटिफाई कले जो गुड गवर्नेंस 4टी कौन डायमेंशंस अच्छी की डायमेंशन कौन कौन ना पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी लीगल फ्रेमवर्क फ्रॉम डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट कौन देखा ना इन सिंपल वर्ड्स कहले मैंने कौन बहुत माने सरल भाषा कहले वी कैन से दैट गुड गवर्नेंस मीन्स द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी फॉर मेकिंग द पीपल हैप्पी लोक मान खुश कौन वेलफेयर करेंगे प्रपोज सेल्फ सफिशिएंट एंड डेभलप्ड. It characteristics of a country in which the system of governance manages its procedures and operations for making the people lead a peaceful, orderly, reasonably propitious and participant life. मैं लोकों को उद्देश्य ही प्रपोज उद्देश्य हम कारण हम साजिए आदेश अनुसार सब किसी हम शांति सब हम या गुड गवर्नेंस कहुए. While defining good governance, the Organization from Economic Cooperation Development by OECD has observed that पुणे आउ गोटे आसिले ऑर्गेनाइजेशन गोटे सी ऑब्जर्व कले गुड गवर्नेंस को लेकिन दैट it denotes the use of political authority and exercise of control in a society in society relation को से control करछि to management of the resources for social and economic development. तो एटा गोटे पॉलिटिकल अथॉरिटी गोटे शासन जहाँ कि कौन करछि ना सोसाइटी रो जो सब संबल अच्छी ताको मैनेज करछि आउ ताको सब कौन ताको मैनेज करिया सहित ताको सोशल सामाजिक और अर्थनैतिक विकास पे से ताको कौन व्यवहार करछि बा मैनेज करछि. नेक्स्ट देखिए कौन ना की एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस. तो गुड गवर्नेंस की एलिमेंट्स और फीचर्स तो देखिबा. द कांसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस हैज बीन ए डायनामिक एंड इवोल्यूशनरी कांसेप्ट since early 1990. It has been subject of good decisions and continuous elaboration. Elements of good governance. The good governance कौन as defined by the World Bank
तो वर्ल्ड बैंक हिसाब गुड गवर्नेंस कौन ना वर्ल्ड बैंक आइडेंटिफिकेशन ऑफ की एलिमेंट्स ऑन एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन नियरली 1990s द वर्ल्ड बैंक आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस तो वर्ल्ड बैंक हिसाब से आइडेंटिफाई अच्छी गुड गवर्नेंस कौन कौन ना पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कौन ना पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कहले इट इंक्लूड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम गोटे पॉलिटिकल सिस्टम एक्सेप्ट ग्रहण कर बाय द पीपल लोक मैंने ग्रहण करते एंड रेगुलर इलेक्शन टू लेजिटिमाइट टू एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर कौन इलेक्शन द्वारा सब लेजिटिमाइट माने सब करा एक्सरसाइज करा नेक्स्ट हूँ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कौन फ्रीडम एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेशन मैंने कौन समस्त गोटे फ्रीडम थी जेकोसी संघर्ष कौन भाग नहीं पारे by various social, economic, cultural and professional to the process of governance सब प्रकार क्षेत्र में प्रोफेशनल क्षेत्र से भाग नहीं पारे सामाजिक क्षेत्र में भाग नहीं पारे अर्थनैतिक क्षेत्र में भाग नहीं पारे कल्चरल जो परंपरा क्षेत्र में भाग नहीं पारे नेक्स्ट हूँ आन एस्टाब्लिश्ड लीगल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी रूल ऑफ लॉ थी आईन शासन थी कौन न्यायालय निरपेक्ष थी टू प्रिसिस्ट ह्यूमन राइट्स सिक्योर सोशल जस्टिस एंड कौन गार्ड एगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन एंड एब्यूज ऑफ पावर मिस एब्यूज नेक्स्ट हूँ कौन ना ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कौन ना इन्श्योरिंग ए सिस्टम टू मॉनिटर एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट officers and officials in relation to quality of service inefficiency and abuse of discretionary power. The related determinants include openness and transparency in the administration. Next of all, freedom of information and expression needed for the formation of public policies, decision making, monitoring and evaluation of government performance. ये सब को कहा जाए. Next होची कौन ना ये sound administrative system leading to efficiency and effectiveness मैंने कौन efficiency थी और effective प्रभावशाली मध्य थी. This is in turn means the value for money and cost to effectiveness. नेक्स्ट हूँ कौन ना कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तो समस्त मध्य कोऑपरेशन सहयोग थी मैंने कोऑपरेशन भल थी कोऑपरेट थे. दिस आसेप्ट हैज बीन फेवर्ड बाय यूएनडीपी एन इम्पोर्टेंट requirement but it has not been emphasized by the World Bank. बर्तमान देखा एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस आज डिफाइंड बाय और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट कौन OECD यह कौन OECD यह कौन कहले द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस से मतलब किसी गुड गवर्नेंस किसी फॉलोइंग कौन जो रही एलिमेंट से देखिए आइडेंटिफाई कले तो फास्ट यूज कौन ना लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट लेजिटिमेटी थी अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी कौन उत्तरदायित्व थे समस्त प्रति कॉम्पिटेंस ऑफ गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसी एंड डेलीवर सर्विसेस कॉम्पिटेंस थी जो पॉलिसी सब बनइबे और डेलीवर सर्विस सेवा जोगाइबे पर्सपेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ रेस्पेक्ट माने ह्यूमन राइट्स को रूल ऑफ लॉ को रेस्पेक्ट सम्मान जनाउथिबे. In respect of these four elements, OECD laid down the following three essential functions of public authority. तो public authority function कौन से कहले जे established the environment in which economic operation function गोटे environment establish हो जो कि economical operation function सब होतबा determining the distribution of benefits जो सब benefit ताकू कौन distribution हबा determine कर जिवो deciding the nature of relationship between the ruler and ruler माने कौन रूलर और नेचर रिलेशन किपर कौन हम ताहा मध्य डिसाइड हम जे शासन करते लोक कथा भितर कि नेचर प्रकृति किपर हम आ संपर्क को प्रकार रहिबो. नेक्स्ट हूँ एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस आर जो आइडेंटिफाइड बाय हैबिटेट कॉन्फ्रेंस 1996 कौन हैबिटेट कॉन्फ्रेंस कौन कला ना अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेसी पार्टीशन रूल ऑफ लॉ पार्टीशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस से कहते. नेक्स्ट यूज कौन एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस आज आइडेंटिफाई बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी कौन कले इन 1997 तो ये कौन है पार्टिसिपेशन गोटे है रूल ऑफ लॉ है ट्रांसफॉर्मेसी है रेस्पॉन्सिवनेस है कन्सिस्टेंसी और और इक्वालिटी है ता सहित इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी है अकाउंटेबिलिटी रहिले स्ट्रेटेजिक विजन रहिले गोटे कौन विजन बोले कौन ना हाँ दृष्टिकोण देखिले जे हाँ आम देश कि आम जो गवर्नेंस ये प्रकार रहिबो
We can briefly explain the basic elements of good governance as follows. तो बर्तमान आउ किसी देखिए गुड गवर्नेंस अर्थ कौन ना एकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एकाउंटेबिलिटी कौन उत्तरदायित्व रहिबे प्रशासन जो माने अच्छा प्रशासक तांको उत्तरदायित्व रहिबे तो ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू बी आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस इन हैंडलिंग ऑफ द पब्लिक फंड्स तो जो अच्छा ऑफिसर माने प्रशासक माने तांके कौन उत्तरदायित्व रहिबे जे तांके ऑफिशियल को कौन काम कले तांको एक्शन कौन नेले आ से पब्लिक फंड्स रो किपरा तांके यूटिलाइज कले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस तो ये कौन रेड्यूसिंग द सेक्टरनेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑपरेशंस नीड्स टू बी रियलिटी अवेलेबल टू द पब्लिक नेक्स्ट हूँ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो ये कौन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस इन प्रोसीड्यूर्स कीपिंग इन व्यू द लार्जर सोशल इंटरेस्ट नेक्स्ट कौन ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन गवर्नमेंट बिहेवियर गोटे कौन स्वच्छता रहा आ गवर्नमेंट कौन व्यवहार करते नेक्स्ट हूँ कौन ना ट्रांसफॉर्मेशन कैरिंग आउट इन वेरियस गवर्नमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ द सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडर्स एंड पीरियड्स व्हिच मेक पीरियडिकली पॉजिटिवल नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन मॉनिटरिंग एंड फीडबैक कौन भाग नेबा मॉनिटरिंग मैंने सब देखा कौन चलती कौन मॉनिटरिंग करवा आ फीडबैक बोले कौन पुणी सिस्टम कौन भल अच्छे खराब अच्छे फीडबैक देवा These are used as means for enhancing efficiency and effectiveness of public administration. For next है rule of law आईन शासन तो सुपरमेसी ऑफ लॉ एंड इक्विटी बिफोर लॉ मैंने कौन आईन रोटे सब सुपरमेसी रहा से आईन सब उच्च रहा आईन आगे समस्त सामान बोली रहा नेक्स्ट हूँ कौन रेस्पेक्ट फॉर ऑल दिस थ्री फॉर इंश्योरिंग लेजिटिमेट एंड क्रिएटिविटी ऑफ गवर्नमेंटल बिहेवियर नेक्स्ट हूँ डेवलपमेंट और ओरिएंटेशन तो डेवलपमेंट ओरिएंटेशन कौन ना कंटिन्यूअसली मेंटेनिंग द फोकस ऑफ गवर्नेंस ऑन इमीडिएट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स नेक्स्ट हूँ कौन ना डाउनसाइजिंग एंड डीब्यूरोक्रेटिजेशन तो लेस ऑफ गवर्नमेंट सोज टू सेव द नेशनल रिसोर्सेज फॉर लेसर ब्यूरोक्रेटिक administrative expenses and diversity the funds to real socio-economic target areas next हूँ कौन ना economic efficiency and effectiveness तो gearing of the administrative milling to by bringing about economy better work culture and a focus on improving efficiency and effectiveness next हूँ कौन to conduct our discussion we can say that good governance implies at least 5 कार्डिनल फीचर्स तो 5 कार्डिनल फीचर्स रही कौन कौन ना फास्ट हूँ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट फॉर द वेल बीइंग ऑफ सिटीजन नेक्स्ट हूँ कौन ना वेल बीइंग बोले कौन लोक भल करवा अफेयर्स को मैनेज करवा डिलीवरिंग टू एवरी सिटीजन ऑल राइट्स डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट अज ऑल्सो ऑल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन तो कौन जो आम संविधान जहाँ जहाँ राइट्स समस्त प्रत्येक नागरिक पाक पहुँचाइबा आम ह्यूमन राइट्स मानविक अधिकार राइट्स पहुँचाइबा enhancement of political social and social economic life of every citizen institutionalized system of governance of country efficient effective responsible transparent and accountable democratic governance तो गोटे गवर्नमेंट थी गणतांत्रिक सरकार जो कि इफेक्टिव थे प्रभावशाली थे प्रतिक्रियाशील थे कौन रेस्पन्सिव थे मैंने कौन आम कह गवर्नमेंट रेस्पन्स कर रेस्पन्सिबल थे ट्रांसपेरेंट थे मैंने कौन स्वच्छता एंड एकाउंट उत्तरदायित्व थे नेक्स्ट देखा गुड गवर्नेंस एसेंशियली डिमांड्स इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑल सिटीजन दिस मस्ट बी कन्स्टिट्यूसली परस्यूड एज द कार्डिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस तो यह गोटे कौन गोटे भल गवर्नेंस हिसाब से सबको रहा दरकार तो ये गुड गवर्नेंस नोट्सटी जदि आप नोट्स चाहते डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देती आप जॉइन हूँ आप नोट्सटी मिल थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।